बच्चों हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस. इन दिस चैप्टर प्रीवियसली वी हैव सीन द रोल ऑफ जयप्रकाश नारायण and total revolution. So in this particular chapter we will see the various thinkers and their ideologies. So today the topic what we are going to see, that is about Rammanohar Lohia and socialism. So as we have seen earlier, socialism is the ideology which is believing that there should be the equal distribution of resources among the people. So there should not be any sort of discrimination among them. So that is the basic thing of socialism, and it is totally opposed to capitalist theory where the resources are owned by the owners only. So this is totally in the welfare of people, and the name of ideology is socialism. So how the socialism was applied in India, and how the Indian thinkers were favoring it, and how they presented their ideas about socialism. So here the name is Rammanohar Lohia, जिनके बारे में हम इस टॉपिक पे पढ़ेंगे, इस टॉपिक और फर्दर के लेक्चर्स में भी. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस राममनोहर लोहिया. ही वॉज द फर्स्ट सोशलिस्ट थिंकर, पहले सोशलिस्ट थिंकर थे इंडिया के, and who rejected to accept the Russian or Western model of socialist for India. मतलब आप देखें आप कि हमने जो सोशलिस्ट पढ़ा था which was totally just revert to capitalism, but that was the model of Western countries. वो किसका मॉडल था? Western countries का. But when we are talking about the socialism in India, so what we are going to see, if we are finding the situation there in India different from the Western countries. See, जब हम अलग अलग कंडीशंस देखते हैं, वेस्ट में अलग कल्चर है, वहाँ की सिचुएशन अलग है, वहाँ का डेवलपमेंट का सिनेरियो अलग है. तो व्हेन द सिनेरियो इज डिफरेंट, द पीपल आर डिफरेंट, देयर लिविंग स्टाइल आर डिफरेंट, रिसोर्सेज आर डिफरेंट, देन हाउ कैन वी हैव द मीनिंग ऑफ दैट आइडियोलॉजी सिमिलरली एज द वेस्टर्न कंट्रीज आर हैविंग. So the meaning cannot be same as the Western countries are having, that is of socialism. So for India he gave the new notion of socialism. पहले ऐसे socialist thinkers थे, अब तक जो भी socialist thinker हुए, they were influenced with the ideology of the West. कि West में जो socialism का meaning है, we are going to focus on that, we have to apply the same. But he was the first one who found that in India circumstances are different. So in different circumstances we need to define the socialism in the different manner. So it was the thing which was about Rammanohar Lohia, and Lohia advocated the principle of equal irrelevance of capitalism and communism in respect of the creation of new human civilization. अब क्या कहा कि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म जो हैं, these are irrelevant, irrelevancy को बताया उन्होंने, and in respect of the creation of new human civilization, एक नए human civilization को create करने के लिए these are irrelevant. Who said this? Rammanohar Lohia. And the new civilization is titled by the Lohia's socialism. और जिस इस नए civilization की उन्होंने बात की, this new civilization is titled by Lohia socialism. इस नए civilization को हम लोहिया का socialism कहते हैं. तो हमने क्या बात देखी है अभी यहाँ पे कि क्या एडवोकेट किया कि द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल इररिलेवेंस एंड कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म in respect of the creation of new human civilization. The new civilization is titled the Lohia socialism. जो नया civilization होगा वो लोहिया का socialism कहलाया, because what he thought that what socialism we are adopting from the other countries, whether it's from West or other country, so that is not applicable on India. वो इंडिया पे एप्लीकेबल नहीं है. देखिए कितनी डेप्थ वाली बात है कि इस बात को सोचना कि हम अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ को अच्छा मानते हैं तो दैट इज़ गुड, बट क्या वो हमको सूट करेगी, क्या वो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग है? तो दैट वाज द मेन थिंग दैट वाज एडवोकेटेड बाय द राममनोहर लोहिया, एंड ही वाज फ्रॉम सोशलिस्ट, फर्म सोशलिस्ट थे. एक बहुत ही जिसे कहते हैं, ही वॉज जस्ट
स्टैटिक ऑन हिज व्यूज़ कि उनको अपनी बात पे बिल्कुल स्टेबिलिटी थी, एंड फर्मली बिलीव द सोशलिज्म ऑफ इफ इट वर टू लेट द पीपल ऑफ टू डेवलपमेंट एंड प्रॉस्परिंग शुड बी बेस्ड ऑन इंडियन सिचुएशन। अब क्या उनका फर्म बिलीव था, मतलब सी हाउ मच कॉन्फिडेंट ही वॉज लाइक कि अगर हम सोशलिस्ट की बात कर रहे हैं एंड इफ वी वांट टू डेवलप इंडिया वाया सोशलिज्म, अगर हम सोशलिज्म के वाया इंडिया को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, देन व्हाट शुड बी देयर, देन वी हैव टू क्रिएट द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द, we have to make the reforms according to the situation of India. हमें इंडिया की सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिफॉर्म करना चाहिए. सो दैट इज़ द मेन थिंग हाउ वी आर गोइंग टू डेवलप इन इंडिया. तो कितनी दिस वॉज द मेन थिंग ऑफ हिज थॉट कि वॉट ही वॉज बिलीविंग दैट पीपल ऑफ इंडिया आर नीड टू बी डेवलप्ड एंड प्रॉस्पर्ड अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिचुएशन, कि उनको किस लेवल से ऊपर लेकर आना है. ग्रास रूट लेवल पर अगर वो हैं तो उसको मिड तक कैसे पहुंचाना है या मिड से और हाई पे कैसे लाना है. सो देयर शुड बी द पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, बट स्ट्रैटेजी शुड बी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स, अकॉर्डिंग टू थिंग्स अबाउट फॉर द इंडिया. सो दिस वॉज द मेन थिंग ऑफ हिज सोशलिज्म. So once again we are going to revise Rammanohar Lohia and socialists, the first socialist thinker in India who rejected the accept the Russian और वेस्टर्न मॉडल सोशल फॉर इंडिया. उन्होंने कहा कि रशियन और वेस्टर्न मॉडल है दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू इंडिया बिकॉज इंडिया इज़ द कंट्री विच इज़ डेवलपिंग स्टिल नाउ. हम उन कंट्रीज से कंपेयर नहीं कर सकते दोज हु आर ऑलरेडी डेवलप्ड. Lohia advocated the principle of equal irrelevance and capitalism and communism in respect of creation of new human civilization. अब क्या किया उन्होंने, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का कि दिस इज टोटली रिवर्स थिंग्स about the India, and he advocated for the new human civilization. And whatever advocated by him, the new civilization that was called Lohia socialism, जो कि लोहिया का सोशलिस्ट कहलाया. दिस वॉज द मेन थिंग ऑफ द टाइम. ही वॉज फ्रॉम फर्म सोशलिस्ट थे, फर्म डिटरमिन्ड बिल्कुल, मतलब वॉट ही वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज थिंकिंग. सो ही वॉज द फर्म सोशलिस्ट हु फर्मली बिलीव दैट सोशलिज्म इफ इट वर टू लेड द पीपल टू डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिंग शुड बी बेस्ड ऑन इंडियन सिचुएशन. कि इफ वी वॉन्ट टू डेवलप द पीपल, so we have to see the situation of Indian people, accordingly we need to develop them. So this was the notion of Rammanohar Lohia. So ये आपका एक बहुत ही important topic है, and this topic we are going to see the meaning of socialism according to the thinker, and according to the thinker what were the main properties and the features of that also we'll see. And here अभी तक जो हमने पढ़ा उससे हम ये तो जान चुके ही हैं कि सोशलिज्म का जो ओवरऑल मीनिंग आता है उससे राम मनोहर लोहिया जो हैं वो उससे डिफ़र कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वो उन चीज़ों को बता रहे हैं कि सोशलिज्म अगर है इंडिया में तो वो उनकी सिचुएशन की अकॉर्डिंग क्रिएट होना चाहिए. द मॉडल शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़. हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें बट इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द इंडियन पीपल. सो दिस वॉज द बेसिक थिंग ऑफ द ideology of Rammanohar Lohia, and this is a very important topic of your book. In further, in the next part we will see more about the socialism of Rammanohar Lohia and Sapta Kranti also. 7 this part is में about that also we are going to study. So this was the topic of the day. Do revise the topic, and ultimately I'm going to send you the PDF for the same. And here in the PDF you will find the more details about the socialism and the connection of Rammanohar Lohia and whatever efforts were made by him. That also you can see in the topic. Whatever efforts were made by him, whatever ideologies were given by him, because he was as firm about socialism, जिनका concept इतना clear हो, उनकी जो ideology थी that was also very much clear about the fact. So that all those things we will see in the next part when we will find so many details of that, so many points of that, and then we will explain there. So that's all for today. Do revise the things, do read the notes, and
Just keep studying the things regularly, so you will be able to find each and every answer of your question. The question can come 1 mark, 2 mark, that detailed answers also. So you have to prepare accordingly. Accordingly you need to answer. So this was the topic of the day. Do revise. Thank you so much.